चले जी स्टार्ट करते हैं। अब जो लफ्ज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है येलो कलर में, इस पे क्या स्टेटस है भाई? आर वी फहद सुपर भाई, कंफर्टेबल और नॉट? अपने 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 आप से स्टार्ट करूंगा कि मैंने कल और काफी कोशिश की सुपर होने की, लेकिन पर पे ही आके फंसा हुआ हूं, अभी सुपर नहीं हुआ। चले कोई बात नहीं, कोशिश हो रही है ना, बस बस जी कोशिश हो रही है ना। ठीक है, जी। कोशिश होती रहे बस, दैट्स नीडेड। चले कोई बात नहीं, इट्स ओके। लास्ट टाइम जो हमने ये किया था, इसमें कोई क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग कोई ग्लिच आया जिसकी वजह से मुझे रिसीव नहीं हुई। यूजुअली टीम्स रिकॉर्डिंग करके माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे सेव करती है, तो आई कुड नॉट फाइंड दैट रिकॉर्डिंग एनीवेयर। तो बट यही लेक्चर मेरा दूसरे एक प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, इफ यू वांट टू वॉच अगेन। ठीक है, 10 डेज फास्ट ट्रैक का कोर्स है, उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन, ये क्लियर था हमें कि फॉरबिडिंग कैसे बनती है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ये वाला पॉइंट सारा, ला तज़हब, ला तज़हबा, ला तज़हबू, ला तज़हबी, ला तज़हबा, ला तज़हबना। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब फॉरबिडिंग जो हमने की थी, द वे वी डिड फॉरबिडिंग was to produce sentences like this, don't help, this, which is la tansur, la tansur, don't help, right? अब मेरा सवाल आपसे ये है, what is the difference between don't help, you don't help, these two sentences, don't help and you don't help? Let me give Don't you help another is one. more like a commanding. He does not help. Let me give Or you another one as well. he does not help is more like a statement. It's a statement. ठीक है. What about he should not help? ये एम्फेसिस। Emphasis. नहीं, ये forbidden statement हुई ना एक तरह की, कि किसी को मैं मना कर रहा हूँ कि तुम ये काम मत करो। क्या ये order है? He should not Order, help. हाँ, order, you Yeah. should take it as an order. Command. Strong suggestion कह लें, strong suggestion. That's better. जी. It's a suggestion or recommendation. Right? मैं आपके पास आता हूँ, यार I don't want to teach today. What do you think? आप कहते हैं you should not teach. So is it forbidding or is it recommendation or suggestion, advice? It's advice. It's an advice, right? So it's more of a recommendation type of phrase. What about this one? You don't help. Forbidding. If this is forbidding, then what's the first one? This is forbidding. जो कि last time की थी. Don't help. Don't help is clear cut, telling somebody don't help. So you don't help is also a statement. Okay? Statement. It's just a statement, just like he doesn't help. He doesn't help you telling something about someone. You don't help is you telling something in second person to somebody. मैं आके Mr. X से कहता हूँ you don't teach, you don't write. Yeah, so that's just a statement. So what makes these statements different from la tansur? That's what we need to cover today first before I move forward with the next step. So la tansur covers don't help part. Okay. Now this one, you don't help. So अब थोड़ी सी noise आ रही है पीछे से यार. So you don't help. Which person is this? First, third, or second? Second. Second person. So this means के usage यहाँ पे भी तंसुर ही है, right? The fail was tansuru, right? Fail was tansuru. What we used to do was make it light. So when you
use a standard marfu form of the fi'l, normal one, in the second person, and you put a la before it. La tansuru. That is a statement. It's an observation. It's an observation statement, whatever you want to call it. Because some also call it observation. So you observe that somebody does something, and then you tell them, okay, you don't help. Okay? So the difference between la tansur and la tansuru is a difference of forbidding and observation statement. Okay, so in the Quran, both are used. Okay, so the only difference is this ending. You do not make it light. You keep it in a standard form. ठीक है, तो जब आपको इस तरह नजर आए, it means it's not a forbidding statement, it's just a normal statement or observation in second person. ठीक है, ये एक चीज मजीद आपको इस पे मैंने बतानी थी. अच्छा फाद, इसके अंदर यू फीमेल जिस तरह है वो तुनसे तनसुरीना है जी. ठीक है, तो वो उसको भी ऐसे लिखेंगे ला तनसुरीना. जी बिल्कुल, that will be la tansurina. क्योंकि उसमें फिर लाइट नहीं करेंगे तो फिर नून उसमें रिमूव नहीं करेंगे. ला तंसुरीना बिल्कुल लाइक ला, और जो अंतुन्ना वर्जन होगा तनसुरना. तंसुरना. अब ला तंसुरना is you don't help, you mean you all feminine don't help, but it's also this one, right? Because the lightest form looks the same. Exactly, मैं हाँ बिल्कुल सही. Lightest form looks the same. So in this case, your context will tell you if it is as forbidding or if it is not. What is the ayah talking about? What has been said before? What has been said after? The entire environment of that ayah is going to tell you if it is forbidding or not. Because in case of forbidding, it might or might not make sense. So when you read through this, then you will really understand what it is. So context become very important. Yeah. Clear? Yes, क्योंकि earlier I was into the opinion कि अगर lightest form में है तो forbidden है और otherwise statement है. But in this example, क्योंकि they both are same, so context will tell. You can't change feminine, can you? No. No. So because you can't change feminine, therefore it remains the same. कोशिश करके भी. जी, वो तो अच्छा फाद पहुंच गए फिर हम. बेसिकली जब हम फ्रेगमेंटेशन कर रहे होंगे तो मैं अगर कोई ला वर्ड आ जाए तो मैं देखूंगा आगे उसके आगे अगर एक प्रॉपर फेल यूज किया गया है, नॉट लाइट और इन लाइटेस्ट फॉर्म, ठीक है, तो वो मैं एज अ स्टेटमेंट कंसीडर करूंगा या सजेशन या कुछ भी. जी, if it is a लेकिन वो fail, चेंज हो जाएगा ना इस feminine के केस में जो भी ला हाँ वो दो केसेस हैं. feminine case में you have to go dig a little bit more deeper. हाँ ठीक है. एग्जैक्टली. So लेकिन इसको कंसीडर कीजिएगा कि ये रिकमेंडेशन जो है ना, ये वाली, सॉरी, ये स्टेटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन जो है, दिस इज आल्सो इन द सेकंड पर्सन. ओके, so this thing is not going to happen in the third person. In the third person ये केस है वो जो भी करते हैं, right? So in the second person, when the fi'l is normal, it is marfu, okay, then it's a statement and or observation. मरफू वो होता है ना लाइट और लाइटेस्ट के अलावा, है ना. हाँ, मरफू जो नॉर्मल आपका Normal. नसरा चार्ट है, यंसुरू चार्ट है, that's marfu, the normal form of the fi'l, right? The light form was the mansub and the lightest was majzoom. ठीक हो गया. यहाँ पे आ जाते हैं. Now if you find something like this, la, and instead of tansuru you have it in the third person, la yansuru. Okay, now हमने जब forbidding पढ़ी, we've studied that forbidding can only happen in the second person. Now this is not second person, this is third person, right? So this is definitely not forbidding, and it definitely cannot be an observation because these both things happen in second person. Okay, the fi'l is marfu in a standard form, nothing changes, no light, no lightest, right? So that type of statement is
a kind of recommendation. So he should not help. It is read usually like should not, in should not way, or a does not way. He does not help. Okay? So that's the kind of tone that is this type of phrase is construct is reflecting. Okay? When you have a la combined with a third person uh, present tense. ठीक है? ये small observation है, tips हैं थोड़ा जो कि सर आपको ये प्लीज ये रिपीट करेंगे फॉर माय लास्ट पॉइंट. जी. So what I'm saying is, so in the forbidding, you saw the forbidding only happens in second person and it is lightest. In the statement and observation case, it also happens in second person, but it's not lightest, it's just normal. But the important thing is there is a ta here. This is the second person we're talking about. In this particular case, your focus is the third person. Okay? So when you have a third person with a ya, right, and you have a la with it, then you are building a suggestion or recommendation of some type. Sometimes it's also a statement. For example, he does not help is a statement, but it's referring to the third person. But most of the times you would see it as a should not model. He should not help, kind of recommendation. Okay? And context will give you more of what it is actually meaning there. Okay? So ये should not वाला aspect जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है. ठीक है? Many times the context might tell you, because you can say you should not help, right? So sometimes la tansuru might also give you a should not type of recommendation, because वो आपको context से जरा deep dive करके पता चलेगा कि इसकी sense क्या बन रही है इधर. Is it a recommendation or not? But mostly in the Quran you'll find third person giving out as recommendations and suggestions. ठीक है? तो ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये चीजें और समझ आनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है? Is it clear? Yes. फहद भाई हाँ क्लियर है. एक इसमें से अगर एडवांस सवाल ना हो, क्या यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट या रिकमेंडेशन की, रिक्वेस्ट का भी कहीं पे ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे आप फर्ज कर रहे हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे गलत रास्ते पे ना चलाना है, या इस तरह की, मतलब वहाँ पे निगेशन क्या आ रहा है, तो क्या कोई ऐसी चीज है कि वो जी रिक्वेस्ट जी. को कवर करती है? देखिए, जो फॉरवर्डिंग होती है ना, आप जैसे आप आप किसी के बारे में अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह डोंट हेल्प हिम. ठीक है? सो यू कैन, वैसे तो डोंट हेल्प तो बड़ा अजीब सा डोंट, चलिए Protect डोंट हेल्प him. ही ले लेते हैं. Allah protect him. डोंट गिव हिम एनी हार्म, चलें ये कर लें, डोंट गिव हिम एनी हार्म, या इस तरह की कोई चीज है. ओके. ला ला तदरब यदरिब तदरब. ला तदरिब. ला तदरिब, it means don't hurt. ठीक है? Don't hurt. Now, when you are telling this to me, you are forbidding me. When you are telling this to Allah, you are actually asking for dua, requesting. Okay? So then the same model is when your addressee is Allah, then it's not a forbidding anymore, it's a request. कॉन्टेक्स्ट मतलब डिपेंडिंग जी. अपॉन कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है. ला तदरिबहु, अटैच प्रोनाउन लगा दिया मैंने आगे, मफऊल. ठीक है? ला तदरिबहु, डोंट हर्ट हिम. सो आप किसी के लिए, अपने लव वंस के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ला तदरिबहु, डोंट हर्ट हिम. So it still takes the forbidding construct, but it's a request towards Allah. With towards any person, you would more likely see it as a forbidding. ठीक है? Does that answer your question, Shams bhai? जी सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. Chale. Let's move forward. So guys, that was forbidding. That was forbidding. Now another flavor of the same fi'l, forbidding, is also called fi'l nahi. Nahi forbidding को भी कहते हैं अरबी के अंदर.
Now what we want to do is the other side of the forbidding. So there is another side which is commanding. So forbidding was don't help. Commanding is help. Forbidding was don't hurt. Commanding is hurt. Right? Forbidding was don't write. Commanding is write. Right? So that's the difference. So you don't have the negation with it. The law aspect is missing. Now, how to construct a command? Let me start with a simpler one first. It's not very difficult. It's very methodological. So let's say we have a word allama. Allama means he taught. सारी ऑब्जर्वेशन जो हमने फॉरबिडिंग के लिए की थी कि इट कैनॉट हैपन इन द थर्ड पर्सन, इट कैनॉट हैपन, इट ओनली हैपन इन सेकंड पर्सन, यू कांट कमांड एंड फॉरबिड योरसेल्फ, दैट स्टेज, एवरीथिंग स्टेज. ठीक है. नाउ दिस इज ही टॉट. इसका प्रेजेंट टेंस वर्जन है युअल्लिमु. युअल्लिमु, allama yu'allim, which means he teaches. Right? Now what we want to produce is teach. That's what we want to produce. Okay? So the process goes as follows. Just like forbidding, आपका first step किसको याद है forbidding में? क्या करते थे? Make it to second person. Make it to second person. So let's make the yu'allimu second person. Tu'allimu. Tu'allimu. Ta'allum. Sorry. Tu'allimu. Tu'allimu. Tu'allimu means you teach. Okay? Now, what was the second step in forbidding? Make it Make lightest. it light. Make it light. Lightest. So let's make it light. Tu'allim. Tu'allim. यहाँ तक तो forbidding के साथ similar है सब कुछ. The third step here, forbidding में क्या था? आप जाके ला लगाते थे उसके पहले, right? This is where you don't put la. What you do is you kill the beginning ta, and it becomes allim. Allim. Allim means teach. Teach. Okay? That's the process. Let's do another one, just so we are super clear on this. So, जी. Fahad Fahad, bhai, एक question. let's- Shams हाँ, bhai, Talha bhai, you go आप on. You go on. अच्छा फहद, जिस तरह ये अगर अल्लिम आ गया हमारे पास लिखा हुआ कहीं, ठीक है, और मेरे पास जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास अल्लिमा आ रहा है, ठीक है, और अल्लिम आगे लिखा हुआ, तो हम इसको सेकंड पर्सन पे जा ही क्यों रहे हैं? हम इसको डायरेक्ट लिख दे के लाइटेस्ट बना दें. आप ये अल्लिमा को जो है अल्लिम में लाइट कर दूं तो बन जाएगा. अच्छा, I got your point. हाँ, मुझे ये इतना बहुत स्टेप subtle करने की difference है. जरूरत क्या? Look at this. Look at this. The one you are talking about is allama. हाँ, अल्लामा. हाँ, The one we are talking about is allim. Two different words. Allama, sorry. he taught, past tense. अच्छा, Allim, teach, present tense. ओके, ठीक. Different. ठीक है? हाँ, ओके, ठीक. जी, शब्स भाई आप कुछ पूछ रहे थे. देखो अब समझ आएगा. नहीं, आप ये टॉपिक ये पॉइंट पूरा करना फहद भाई, फिर पूछता हूँ. नहीं, I'm done. ये हो गया. मैं असल में This शम्स is भाई मैं allama. This is past tense. The last question was, can we not just take allama and make it lightest? So I said no, because first of all, there are two different words. Allama and allim are two different words. Allama is past tense. Allim is driven from present tense. Second, you don't command in past tense. That was the fundamental principle that we discussed in the beginning, right? Ji, Shams bhai.
नहीं से मैं इसकी कुरान से जो एक वो सोचा था कि जैसे इकरा जो हमारे जी पे वो आयत शुरू होती है, तो दैट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि जी वो जी एक कमांड है। तो डज इट मीन कि द ओरिजिनल वर्ड इज टुकरा आखिरा एक और उसको नहीं उसको जो द है ओरिजिनल क्या? वर्ड इज मैं इफ आई रिमेम्बर इट करेक्ट पास्ट टेंस इज qara'a yaqri'u um yaq- yaqra yaqra'u qara'a yaqra'u I believe yaqra'u. That's the word. That's the fail. Qara'a is past tense. He read. Yaqra'u is present tense. He reads. So what you did, you make the yaqra'u taqra'u uh, taqra'u. So sorry. First you made taqra'u, then you made lightest lightest, ru which is taqra, yeah taqra, and then you kill the ta. ठीक है? अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पे ले आए आप मुझे। अब मुझे ये बताइए, now you have a sukoon here. Can you read this word? नो No. This was the next thing I was going to teach you. This is a two sukoon problem. So there are few words जिनका जो second letter होता है उस पे सुकून होता है, जैसे ये है, ठीक है? So when you remove the ta from those, you end up in a two sukoon problem because the ending and beginning both have sukoons सही and you cannot read it anymore, right? In that case, what happens is you have to give this word little bit of help. Okay, so let me take it on the second line. अब इसको हेल्प कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक टांग जख्मी हो चुकी है, यू हैव टू गिव हिम अ अलिफ क्रच, अलिफ एज अ हेल्पर, ठीक है? Now the next question is, what should I put on alif? It is a fatha, is it a dhamma, or is it a kasra? What should I do? ठीक है? So अब उसका तरीका ये है कि you go back to the हुआ version and the second लमसुर last letter of that हुआ version. What check the fatha there. If this is dhamma, then you give it a dhamma. Otherwise, you give it a kasra. And that's where ikra comes from. This is a command that means read. दम्मा मतलब पेश अगर है Pesh. तो फिर Pesh. पेश आएगी जी. अलिफ पे, वरना नहीं। Pesh. Let's give another. Let's do another similar example. So हम अपने pet word से करते हैं. बाद So में एक यहाँ पे पूछूं, जी अगर जी जैसा कुल है। मैं आ रहा हूँ वहां पे। अच्छा ओके, वो थर्ड चीज सिखानी है, उसमें एक अच्छा छोटी सी सॉरी। रेगुलरिटी और है, ठीक है? um let's say yansuru, ठीक है? Now yansuru becomes tansuru. Tansuru loses the ta, becomes noon suru. Becomes the lightest तंसुर, first, tansur, तंसुर right? Tansur, and then it loses the ta, becomes sod with a sukoon, and noon ra. सही लिख रहा नहीं, हूँ? नहीं, it will noon with jazm, noon raw and jazm. not सॉरी, मैंने नून noon नहीं, with गलत जगह jazm। लिख दिया हुआ है, sorry. This is you, this is noon, like this, ठीक है? So we have noon with jazm, sukoon, and the ra with sukoon. We have two sukoon problems. So what you do is you give it a crutch. Alif, noon, sod, and ra sukoon. Now how to find what should go on alif? Alif command के केस में alif में either it will be a dhamma pesh or a kasra. Fatha will never come. ठीक है? Fatha will never come. There are few exceptions, but that is later. But mostly it is going to be dhamma and kasra. Okay? So you go back to the hua form and you look at the second last root letter. You can of course find it from here when you are well versed and you have experience and you are expert in this. You can find it here.
because you know swad is the second last root letter here. So इसके ऊपर आप check करेंगे. Now in this particular case, swad has a dhamma. As soon as you find a dhamma, you give it a dhamma. Unsur. And this would mean help. Okay. Let's do another one, and I want your help. I'm not going to tell you. आप लोग बताएंगे, ठीक है? लेकिन डॉक्टर साहब अगर वहां पे फतह हो या होगी नहीं फतह, यहाँ पे फतह हो सकती है. फतह होती तो फिर जेर लगा देते. Let's take an example of fatha, no problem. So there is a fi'l called yaftahu. ठीक है? Yaftahu means he opens. ठीक है? Let's construct this. So the first step, make it taftahu, second Taftahu. person. taftahu. Taftahu becomes Taftah. taftah. Taftah loses the ta, becomes fa with a sukoon, and then ta, ha, like this. Now you give it a crutch, alif, fa, ta, and ha. Now, how to find which haraka goes on alif? Second last word, which is ta, which is Ta. which is zabar, yeah, fatah. So it will come as kasra. Ji. Because it's not dhamma, anything other than dhamma gives you kasra. Iftah. Iftah. Open. Iftah. Fad. Iftah. Ha के ऊपर नहीं आएगी. Sorry. Yeah. Iftah. Iftah. Open. Okay. Clear? जैसे जवाब में आता है डॉक्टर साहब अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली, ये अफ उधर तो अफ है ना जी. अफ्ताह, that's the same अफ्ताह. नहीं अच्छा, वो केस डिफरेंट है. अच्छा अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतक. ये मस्जिद में दरवाजे के अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली नहीं, वो अब्वाब. एक्चुअली आपको तजवीद की वजह से लग रहा है बेसिकली. क्योंकि आप अल्लाहुम्मफ्ताह ली पढ़ते हैं ना. अब मीम और अलिफ के साथ आप कसरा कनेक्ट नहीं कर पाते. ठीक. अल्लाहुम्मफ्ताह ली आपसे पढ़ा नहीं जाता, तो फॉर स्मूथनेस पर्पसेस दे रीड इट लाइक मफ्ताह ली. अच्छा, लेकिन आप उसमें अलिफ को कंप्लीट इग्नोर करके डायरेक्ट फा पे जा रहे होते हैं. ठीक है. राइट, बट इट कैन नॉट बी अफ्ताह. यस. एक और एग्जाम्पल करते हैं. थोड़ी सी मैं आपको इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देता हूं, ठीक है? लेट्स डू यज़हबना. यज़हबना का मतलब नसरना. दे ऑल गो. हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कमांड गो बेसिकली. ठीक है? Now I want one person to tell me the first step, the second person tells me second step, then third step, the fourth step. Let's go one by one so everyone gets a turn. मैं चाहता हूँ आप लोग इसको कंस्ट्रक्ट करें टोटली. ठीक है? स्टेप नंबर 1, anyone. यज़हबन. We need to make a second first. हाँ, तज़हबना. बिल्कुल. तज़हबना. And we'll make it light. तो that would be वकास भाई क्या होगा? तज़हब. पक्की बात? जी नून हमने. Which pronoun is this? What is the file? ये सेम रहेगा. ये सेम रहेगा. ये क्यों? क्योंकि अंतुन्ना यस. अंतुन्ना वाला फॉर्म. अंतुन्ना है. यस. ख्वातीन को नहीं चेंज कर सकते आप वकास भाई. माशाल्लाह तजुर्बेकार आदमी है. बिल्कुल. 17 साल हो गए. गिव अप नहीं कर रहे वकास भाई. हाँ, नहीं वो अलग बात है, मोटिवेशन है अभी भी. तज़हबना. लेकिन आप Nothing changes there.
हाँ, लेकिन बंदा आपको पता है ना, बंदा कोशिश करता रहता है, मतलब हाँ, ऑलवेज बिल्कुल फेल्स, लेकिन वो ये है। बिल्कुल यू लूज व्हेन यू गिव अप, आपको पता ही है, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। तो तो कुछ तज़हबना, गेम्स कुछ गेम हाँ से जी। पहले दिन ही लूज कर देना चाहिए, खामखा की मेहनत। हाँ, अच्छा, तज़हबना is the lightest. So what's the next step then? ला, ला तो forbidding था, remove the remove था. यस, So ta is ta remove to zal is with the sukoon. ठीक है. Now we have not a two sukoon problem, but one sukoon problem, but it's in the beginning. You can't read it. So the pure principle is when you end up in a word that is unreadable, yeah, that's where you are going to give it that word a crutch, because the word can still be readable if it has a sukoon in the end. And in the beginning, you can't read it. ठीक है. So इस particular case में you give it a crutch just like that. अब मुझे बताएं कौन सा इसके ऊपर हरका आना है अलिफ पे. अगर सेकंड लास्ट पे जज़म आ रही है तो उससे एक पहले ले लेंगे, फिर ज़ेर आ जाएगी, फिर हा के ऊपर अगर ज़बर है तो फिर मैं अलिफ से नीचे ज़ेर ले लूंगा. जी बिल्कुल, कसरा. इस इज़हब. Now you're saying go to a group of women. Go. Okay. Clear है यहाँ तक? Easy? Any confusion? अच्छा, एक और मुझे कंस्ट्रक्ट कर दें, ताकि फिर मैं आपको एक उसको स्कूल वाले उसके ऊपर ले जाऊं. लेट्स डू यन सुरीना. यंसुरू. यन सुरू तो कर लिया ना. लेट्स से यन सुरीना. ठीक है. नाउ यन सुरीना इज विच प्रोनाउन? अंती. अंती. नहीं भाई, तंसुरीना है फादो, यन तंसुरीना. सुरीना तो कुछ है ही नहीं. तंसुरीना है, तंसुरीना. तंसुरीना है, बिल्कुल. So this is Tansurina. Anti pronoun, right? So we are going to make it lightest. Tansuri. ठीक हो गया. Remove the ta. We have the same problem. Sukoon. Suri. ठीक हो गया. Then you give it a crutch. in You go back and you find the second last root letter. What is the second last letter? Root letter. या. And that is what I wanted to teach. It's not ya. देखिए, द बेस्ट तरीका जो फाइंड करने का ये है वो ये है कि यू गो बैक टू द हुआ फॉर्म ऑफ द फेल. हुआ Because फॉर्म. अच्छा. हुआ form of the fail, because this ina was just the ending. It was not part of the word, right? The most original form of the word you will find in the huwa form. So when you're looking at tansurina, in your mind you should go to huwa. What is the huwa form? यंसुरू. Yansuru. Then find the second last haraka. What is the second last haraka? तम्मा. Dhamma. And you find dhamma and you put the dhamma. उनसुरू. उनसुरी. Unsuri. Unsuri Ramin. Help Ramin. Okay? Because you're talking about anti. ठीक हो गया? So just like the forbidding, हमने 6 endings की थी. Sukoon, a, u, in, a, na. Those apply here as well. The difference is when you are talking about a normal fi'l, when there is no two sukoon problem, or you can actually read it, like for example the one we did in the beginning, like allama. Allama, yu'allimu. Allimu. It was allim, and then it is allima,
allima, then it is allimu, allimu, then it is allimi, then it is allima, then it is allimna. Allim, allima, allimu, allimi, allima, allimna. These are your 6 commands. Okay. So if you know these endings, this sukoon, u, e, na, just like before. The problem is the beginning. Okay? Sometimes you have a fail like this. For example, now you know unsuri. Can you in your mind come up with a command for huwa version, for anta version, tansuru? एक दफा क्वेश्चन रिपीट करो फर। मैंने आपको तंसुरी ना करवाया है, राइट? हाँ। I want it for tansuru. So you are making it lightest, sorry? Tansur. Then you're removing the ta. You can't read it anymore. And you put a alif, and now you need to give it a haraka. Ansuru. Unsur. फहद, एक ये जो अभी हमने नीचे वाली एक्सरसाइज की है, अल्लिमा अल्लिम अल्लिमा अल्लिमू, ये वाली जो चीज थी लाइटेस्ट फॉर्म थी ना यू के अंदर, सेकंड पर्सन के अंदर तुमने लिखी हुई है ना? जी दोनों सारी चीजें। Yes. So if you have produced unsur, I think, did we do unsur? This one. You produce this one, unsur, in your mind. Then you can produce the 6th command. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Can you produce 6 for iftah? Iftaha, iftahu, iftahi, iftaha और iftahna. Perfect. Very good. अच्छा, Let's do ikra. Ikra. Ikra'u, ikra'i, ikra, ikra'na. Allim, allima, allimu, allimi, allima, allimna. U, sukoon, u, e, na. These are 6 commands, just like forbidding. आपको सिर्फ जो beginning है, that is sometimes you have to analyze. Otherwise, you are able to produce the 6 commands. So another challenge. So we did this izhabna. I want 6 command for this fail. Ishab, ishaba, ishabana. नहीं, Not izhabana. Ishaba. izhaba तक तो ठीक है. So अंतुम izhabu, ishabu, ishabi, ishaba, ishabna. Perfect. These are the 6 commands. Now, these commands are commands when you are talking about people. These are the requests and when you're talking to Allah. Okay. The construct is the same. So the command can be used in different way, right? जैसे आपने भी मिसाल दी इफ्ताहली. So that is basically command, but you're basically asking Allah to open up things. So that's not a command, that's a request. That's a talab. You're asking for something. Clear है यहाँ तक? फहद, ये जो लास्ट स्टेटमेंट दी है कि जब हम टॉकिंग टू अल्लाह करते हैं, तो ये वाली जरा एक दफा दोबारा रिपीट करना. तो ये सिंपल सी ये बात है कि जब आप ये कमांड्स करते हैं, of course you can't command Allah, right? So when you use the same construct to address Allah, then it is actually a dua that you're making, a request you're making, right? But for somebody else, you can tell me and you can give me a command, but with Allah it's a request. Okay? Now
one लेकिन more फादर स्ट्रक्चर सेम होगा उसमें या सब सेम होता है, यानी सब स्ट्रक्चर सेम। सेम है लेकिन वो उसमें दुआ में चली जाएगी। जी जी जी। वो दुआ पता होगी, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, है ना? यस्सिर is ला तुअस्सिर, ला तुअस्सिर, not तुअस्सिर। Don't make difficult. Now, is it a forbidding or is it a dua? it's a request. When you're talking to Allah, It's a request. it's a request, but the construct is the same, right? So when you're addressing Allah, it's a talab, it's a dua, it's a request, right? Grammatically, construct is the same. ठीक है? फहद, अब जैसे ला तुअस्सिर है, अगर मैं इसी की कमांड 6 कमांड जनरेट करना चाहूँ तो अस्सिर, अस्सिरा, अस्सिरु, अस्सिरी, अस्सिरा, अस्सिरन्ना, अस्सिरना, अस्सिरना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Basically you're saying make difficult, you both make difficult, you all make difficult, you girl make difficult, you both girls make difficult, you all girls make difficult. You're promoting too much difficulty, Tala. Always. Perfect. It's a very important skill to develop. ठीक है? अभी हम इंशाल्लाह जब सूरा खोलेंगे तो उसमें आपको ये चीजें अब नजर आने लगेंगी। लास्ट एबनॉर्मेलिटी, इरेगुलरिटी इसमें बता दूं आपको। अब आपका एक फेल है काला, जो तला आपने क्वेश्चन किया था, is a past tense. It means he said, and its present tense is yaqulu. दोनों आपने कुरान में देखे हुए हैं। यकूलू means he says. Now, where does this wow come from? ये abnormality है जिसको हम आगे कभी सर्फ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे। Basically, this wow was never gone anywhere. ये वो वर्ड है जिसके जो मिडिल रूट लेटर है, इसके 3 रूट लेटर्स हैं, काफ, वाव एंड लाम. The middle root letter is waw. Waw is a vowel root letter and it sometimes gets hidden. So in this case, it is replaced by alif in the past tense. ठीक है? I believe this is called ajwaf. अच्छा फहद, या क्यों नहीं रूट लेटर में काउंट करते? Because ya is just the indicator of a person. First person, third person, second person. It's not part of the original word. अच्छा, ठीक है? और जो ending है, it's an indication of a pronoun. सही। una ending, ina ending and so on and so forth. और एक बेसिक क्वेश्चन, कमांड हमेशा जो है वो प्रेजेंट टेंस में की जाती है ना? जी, you can't command in past tense. और ठीक है? और forbidden जो है वो पास्ट में हो सकती है? नहीं, नहीं we हो did that सकती। in the last class. Forwarding and commanding can never be done in the past. Okay. Doesn't make logical sense किसी भी लैंग्वेज में। अब आपके पास यकूलू है, ठीक है? Now let's try to construct the command out of it. First we'll do taqulu, ठीक है? Then we will make it lightest. ठीक है? Then we will remove the ta. अच्छा, it become two jazm. Two jazm problem, two sukoon problem, but in the end. Now, can you read this? No. You can't read this, right? So when this happens, you have to choose between the two letters, and usually usually क्या तकरीबन always the vowel letters, there are two vowel letters, waw and ya. They are weak letters. When such a situation happens, the weak letter is dropped, and you are left with qul. Okay, and qul is say, and this is qul hu Allahu ahad. That's where that qul comes from. Say.
Clear? Dr. Saab, this one, Sakun in the last two letters, तो repetition बताइएगा. जी, when you have this problem, last two sukoons, this usually would have, if one of those letters is a, if क्या almost इस उसी वक्त problem आती है ज़्यादा जब one of those letters is a vowel. Waw or ya is a vowel letter in Arabic. ठीक है? So you drop the vowel letter because they are weak letters. Okay. So because it's dropped, it becomes kul. अब ये कितना widely used word है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हु अल्लाहु अहद, and so on. And this is where it comes from. It's a present tense. It has a fa'il. Which fa'il is inside it? What is the inside doer of kul? You. Anta. Right? The fa'il is anta. And it's a present tense. ठीक हो गया? Yes. जबरदस्त. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ले जाऊं before we conclude. I just want to go down. फहद, ये जो कुल है इसकी 6 फॉर्म्स बनती हैं? जी बिल्कुल बनाओ. I want you to create them. Try it. कुल, कुला, कुलू, कुली, कुला, कुलुन्ना. Qulna. कुलना. Qulna. कुलना. Almost nailed it. Very good. Qulna. Okay? 6 forms. मुझे तो आपने पे हैरानी हो रही है. नेक्स्ट वर्ड में फिर वही 0 पे आ जाएंगे. क्यों 0 पे आ जाएंगे यार? बताया नहीं अभी आपको. You lose when you give up. आप स्कॉश में जीतते हैं तला भाई? हाँ, काफी. देखिए उसमें दूसरों को मारना होता है शम्स भाई. ये जब बॉल आ रही होती है ना, ये सोचता है ये फहद है, ठा, ये वकास है, ये शम्स है, ठा. उसमें मारना होता है. उसमें बहुत अच्छा है तला. जैसी एक चेहरा सामने आता है तो ये अपना रैकेट उठा लेते हैं. फहद को बहुत अच्छी तरह पता है फहद को कैसे मार पड़ती थी क्रिकेट में. अरे बहुत मार खाई भाई हमने. जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? आप खुश हो ले तला भाई. लोगों को पता नहीं जंगल में कभी मोर नाचा ही नहीं भाई. अच्छा, ये कमांड के सारी जो कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे मेंशन्ड है आपके इस नोट्स में पेज नंबर 50 के ऊपर. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं. ये हर तरह की, इसमें कुल वाली एग्जांपल नहीं है. बट आई होप यू नो दैट. चलो, बाकी ये वाली जो नीचे एक्सरसाइज है, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज कमांड, व्हाट इज फॉरबिडिंग एंड व्हाट इज ऑब्जर्वेशन. राइट, सो इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू टू डू. ठीक है, अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, जैसे यहाँ पे अटैच प्रोनाउन है फबश्शिरहुम. ठीक है, अब यहाँ पे फबश्शिरहुम लिखा हुआ है. ठीक है, फ इज अ कनेक्टर. You know, you're looking at bashir. अब इसका मतलब है to congratulate. बशरा युबश्शिरु. ठीक है, that's the fail. Now bashir is a command that has an attached pronoun. So what you have to do is first identify if it is a command or not, if it is forbidding, if it is observation, or if it is a command. You can clearly see there is no la here. So it can neither be forbidding nor an observation or a statement. So it has to be a command. It's bashir, so you'll say it's a command. Okay? The second step you have to take is basically try to translate it if you can. Okay? Meaning आपको given है. If it means to congratulate, so bashir would mean congratulate. Congratulate और home की definition क्या है? Then. Them. Congratulate them. Exclamation mark. बात आई थॉट कि फबश्शिर होम, जिस तरह हमने भी पहले जब शुरू में कमांड और स्टेटमेंट और ये पढ़ी थी, तो जहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोनाउन आ जाए
तो वो जो है बेसिकली अमूमन कोई स्टेटमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन होती है। एक्स्ट्रा नहीं, ये नहीं पढ़ा था हमने कलम। दैट्स नॉट व्हाट वी डिड। नहीं, मैंने एक्सट्रैक्ट ये इससे किया था कि अगर कोई इस तरह ही नहीं शुड नॉट हेल्प नहीं, देम, यू इस तरह कांट करके। जनरलाइज। नो, अच्छा, यू कांट जनरलाइज दैट। ठीक है। सो दिस इज द एक्सरसाइज, इट विल हेल्प यू। फॉर एग्जांपल, ला तुतिया, what sort of statement is this? Is it forbidden, forbidding? Is it observation? Is it command? क्या ख्याल है? Number 5, forbidden, it's forbidding. ठीक है। So what could I translate it to? don't obey, Don't obey. It's a very good exercise. Try it first yourself, and then inshallah we can pick it up in the class. ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना इस पे ना थोड़ा सा माइंड यूज करें। It will help you. Last but not least, you have alhamdulillah closed this course content. ये वाला part, जो पूरा जो syllabus था ये वाला, we're there. This is the last page of this syllabus. ठीक है, page number 52. So this is a cumulative exercise that brings everything together. If you are able to attempt it, great. If not, in the next class we will do it. ठीक है। और in the next class we'll also open up a surah and just do little bit practice. और वो practice थोड़ी सी different model में करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को जरा यूज कर, यानी every individual gets to contribute enough. ठीक है। तो basically माशाल्लाह इस पूरे, आज के 24th है ना, this is what you guys have covered. Look, all of this. मुझे याद है फर्स्ट डे में हमने खोला था इस पेज को भी देखा था, it looked very daunting, but now we are here. Everything written here you should know. ठीक है। इसके बाद जो भी कोर्स कंटेंट है, इसके बाद की जो अरेबिक है, that is the material you don't have. I'll see if there is something I can produce and I can give. इसके बाद से जो टीचिंग होगी उसके अंदर जो भी हम मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे क्लास में, so I can put it on the shared drive and you can have access to it. If I have any PDFs, I'll share that with you, क्योंकि वो इस कोर्स कंटेंट में शामिल नहीं है। ठीक है। तो फादर, वो जो आपका रैपिड वो 10 डेज वाला कोर्स होता है, तो उसमें आप यही पार्ट कराते हैं या उसमें वो एडवांस पार्ट भी है? नहीं, उसमें यही है, ये 10 डेज में सारा कोर्स कंटेंट खत्म होता है ये वाला। अच्छा जी। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास चॉइस है बेसिकली, कुछ और चीजें हैं अभी जो नहू की स्टडी, जो है फेल की स्टडी में आप लोगों ने कुछ और चीजें नहीं की हुई, आपने इसम मौसूस नहीं किए हुए, आपने और बहुत सारी चीजें नहीं की हुई अभी। वी कैन कंप्लीट दोस, और वी कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस एंड वी कैन गेट अ फ्लेवर ऑफ सर्फ स्टडीज लिटिल बिट। ठीक है, हम उधर भी जा सकते हैं। तो आई थिंक अबाउट इट कि वो हमें क्या अप्रोच लेनी चाहिए। हो सकता है वी टेक सम मिडिल ग्राउंड, डू लिटिल बिट मोर एंड देन मूव इनटू सर्फ स्टडीज, और थोड़ा सा उस वर्ल्ड को भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। और ऐसे मुझे हम इसम मौसूल इतना यूज करते हैं पर हमने वो पढ़े नहीं, क्या उसकी क्या वजह है? उसकी एक मेजर वजह ये है कि वो फेल के साथ बहुत टाइड अप है। अच्छा, ठीक है। और जब आपको फेल अच्छा समझ आ जाए तब आप इसे मौसूल को टच करते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, तो इस वजह से इसम मौसूल का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक फेल, क्योंकि पूरा जुमला होता है, फेल इज अ सेंटेंस, इसम मौसूल टेक्स दैट सेंटेंस एंड मेक्स इट अ फ्रैगमेंट। ठीक अच्छा, है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो उस वक्त ज्यादा समझ आता है जब फेल के ऊपर जरा अच्छी कंफर्टेबल वो आ चुकी हो अथॉरिटी, सही। इस वजह से। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट लाइकली हमारा या तो फेल इसम मौसूल होगा, या हो सकता है पैसिव्स हो। आपने एक्टिव फेल्स पढ़े, पैसिव्स नहीं पढ़े अभी तक। ठीक है। सो वी माइट टच अपॉन देम। बाद बट एक चीज बस आखिरी पूछ लूं, जी ऑफ एक दफा कोर्स। नीचे जाओगे, एक स्टेटमेंट आ रही थी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, सूरह फ्रॉम सूरह जी तकवीर, जी। ये वाला, इसमें ला कौलू जो है बेसिकली ये कमांड एक तरह की बन रही है ना, या फॉरबिडन स्टेटमेंट है? ये ला है कि ल है? ये लाम अलिफ है कि अच्छा, लाम विद ओके फतहा है? ओके, ये भी इस तरह भी देखना है। अच्छा,
मैं समझा इस लाम अगर डाल देते हैं तो वो बेसिकली नॉट। नहीं, ये लाम कौन सा लाम था, याद है? ये लाम Emphasis. बेसिकली एम्फेसिस हो गया फिर। दिस इज एम्फेसिस लाम। ओके। तो इसमें डबल एम्फेसिस है, एक इन्ना वाला एम्फेसिस है और एक ये लाम वाला एम्फेसिस। ठीक। And Try to do qalu this. is जी। qalu is rafa. Sorry, jar. Qalu. कौन सा वाला, ये कह रहे हैं लकाउलू? जी नहीं ये जड़ नहीं है ना। हाउ कैन इट बी जर? हाँ इट्स नहीं तो ये लेकिन ला जो है एम्फेसिस, अच्छा एम्फेसिस वाला है, एम्फेसिस ऑलराइट, वाला है ओके ना, ओके तो ओके ये ओके, हर्फ नॉट ऑफ हर्फ जड़ ऑफ नहीं जर, है नॉट, ना। ठीक है, गॉट इट, ठीक है। अच्छा ये गुड ठीक है। पॉइंट है कि जो है ना इस तरह फिर हम इसको स्टेटमेंट और उसमें ना करें। ओके ठीक है, ट्राई टू डू दिस। ये एक्सरसाइज जो है ये इंशाल्लाह एवरीथिंग इट विल कम टुगेदर, और फिर हम लोग कुरान पे इसको जरा अप्लाई करेंगे। जो भी हमने लर्न किया अभी तक सारा, हमारी जो सूरह मुनाफिकून है वो हमने काफी हद तक की है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर और बहुत कुछ है करने को। तो विल अप्लाई ऑल ऑफ दैट टू दैट सूरा इंशाल्लाह, मे प्रोबब्ली इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। अभी अभी भी इजहार है, काफी कुछ है करने को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह हमने अभी नहीं टच की हुई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे। बट मैनी कंग्रेचुलेशंस माशाल्लाह फॉर कंप्लीटिंग दिस, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अब ये सारा कोर्स वर्क जो है आपकी डॉक्यूमेंटेड इसमें तो है, लेकिन जो 10 डेज का कोर्स है उसमें भी यही चीज कवर्ड है, लेकिन अ बिट मोर क्विकली इन 10 डेज, 3 बिट hours each बिट class, ठीक है बिट जी। बिट मोर क्विकली, सर 10 दिन और 1.5 साल में फर्क होता है। हाँ हाँ, नहीं बस ये एक्चुअली मैं आपको एक और बताता हूँ बात। आई जस्ट वांट टू शो यू नाउ दैट यू ब्रॉट दिस अप। लेट मी शो दिस टू यू। ये है जनाब बैना का ड्रीम प्रोग्राम, ठीक है, जिसका स्टूडेंट मैं खुद हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर सेशंस हैं, नॉट दिस वन, स्टडी में टॉपिक्स, दिस वन। नाउ टॉपिक्स के अंदर दिस इज टोटल ड्रीम प्रोग्राम, ठीक है, एंड तक, ठीक है। इसका जो इंटेंसिव 1 है, डे 1 से लेके डे 10 तक, दिस इज 3 hours ईच क्लास फॉर 10 days। आपने बेसिकली ये कवर किया है अभी, राइट? आपने ये इंटेंसिव 1 कवर किया है अभी। ये जो सारा कोर्स वर्क है इसके ऊपर भी आई बिलीव कुछ लिखा होगा, ये देखिए नीचे लिखा है बैना 10 days अरेबिक इंटेंसिव, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव कवर्ड। नाउ if you look at dream program, there is intensive 1, 2, 3, 4, हर कोई 10, हर चीज 10 दिन की है, and 3 hours each, ठीक। then you have nahu, this is another deep dive into Arabic, and this particular section has 127 lessons, ठीक है, 1 hour each, 1.5 hour each max. Then you have the surf study. Then you have the reader reading without the harakas. Then you have balagha. Then you have advanced. Then you have, there are many other things. By the time you complete this course, you are pretty fluent with Quranic Arabic. You are able to read any Arabic tafsir without harakas. ये काफी comprehensive course है। तो मैं आपको ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि there is a journey that we have to take. ठीक है, हम एक जर्नी पे हैं, and there is no rush, but we are इंशाल्लाह on the right track, ठीक है। हम आहिस्ता 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 चलते जाएंगे, आप देखेंगे चीजें खुलती जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इट्स अ बाद में ग्रेट। तलहा भाई जी की एक बात शेयर करना चाहूंगा, तलहा भाई इजाजत जी दें प्लीज इस बात की। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमें देखने में तो लंबा जर्नी लग रहा है कि ये कब कंप्लीट होगा भी कि नहीं। तलहा भाई की बात ये थी कि इस जर्नी के बीच में अगर हमारी मौत आती है तो वी विल बी कंसिडर्ड एज डाइंग इन द पाथ ऑफ अल्लाह। जी जी, एब्सोल्युटली, एंड तो दैट्स द होल ये पॉइंट ना। हाँ, शम्स तो भाई, जितना वी आर लंबा नॉट जर्नी आफ्टर, उतना बेहतर है। जी हाँ जी, वी आर नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग इट इन अ रश, वी आर आफ्टर स्टेइंग ऑन द पाथ बेसिकली। कीप ऑन पुटिंग द एफर्ट, कीप ऑन पुटिंग द एफर्ट। अब वो जब भी कंप्लीट हो, हम इस कोर्स के बाद जब ड्रीम कर लेंगे ना पूरा, तो आपको ख्याल आएगा, अरे
यार ये जो उस्ताद जिसने मुझे आखिरी चीज कराई है ना ड्रीम प्रोग्राम की, इसका भी तो कोई उस्ताद है, ठीक है, उसको वो चीजें पता है जो हम इनको भी नहीं पता, तो दिस इज अनदर लेवल, सो यू कैन कीप ऑन गोइंग, इट डजंट एंड रियली। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू स्टे ऑन दिस पाथ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे नहीं, ये कैसे तलहा भाई चीजें की खुलती तरफ से ऐसी बात आना जो है वाकई में आए ओपनर था। जबरदस्त। तला, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी जुमला तलहा भाई समझे नहीं है। मैं समझ गया, इसलिए मैं इनको हैंड ओवर किया स्टेज। म्यूट पे हैं भाई आप। सॉरी, नहीं, मैं एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे ये बात चल रही थी जहन में कि यू नेवर नो कि किसको किसकी जिंदगी कितनी है। इट मे बी पॉसिबल कि इसमें जितना लॉन्ग जर्नी होगी, क्या पता लोग बीच में आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएं इन द अदर वे। तो असल में ऑफ ये कोर्स। जर्नी है जो कि हमने तय करनी है सारों ने। और मैंने जो एक काम शुरू किया है वो भी बस यही सोच के शुरू किया हुआ है कि चलो बाकी जिंदगी तो फजूल गुजारी, पर अब जो है कुछ अकल आ जाए। हाँ, बस ऐसे सही ही है बात। तला। याद होगा फर्स्ट आमीन। क्लास में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्टे इन दिस कोर्स इफ यू वांट लॉन्ग रन, इट्स अ जर्नी। बिल्कुल। सॉरी वकास भाई, असल यू में सेइंग यार समथिंग, आई कट यू ऑफ। मैंने हमेशा ये देखा कि सोबत का बड़ा असर है, और ये मुझे बात बड़े अरसे बाद जाके समझ आई। और उसका ये है सोबत का असर कि आप अच्छे दोस्तों की कंपनी में रहें, तो माशाल्लाह इस ग्रुप के अंदर सारे इतने अच्छे हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो तो बस ये तलहा बात। भाई आप फाद भाई से डिस्कनेक्ट कब हुए थे? मैं वैसे हुआ तो नहीं था, पर हम अब ज़रा ज़्यादा कनेक्ट हो गए डिस्कनेक्ट तो अच्छे कभी उसके नहीं हुए, अंदर। हम लोग डिस्कनेक्ट तो कभी नहीं हुए, लेकिन इतनी रेगुलरिटी हमारी, पहले तो हमारा तकरीबन एवरी सिंगल डे मल्टीपल टाइम्स मीटअप हुआ करता था, बट जब से तला स्वीडन और मैं जर्मनी गया तो हमारा कनेक्शन थोड़ा कम हो गया, कभी कभार बात होती थी। नहीं, वो इसलिए पूछा था कि सोबत तो यही थी ना, लेकिन चलें ठीक है, अल्लाह मियां ने सही वक्त पे सही चीज कराई। नहीं यार, तला तो लेकिन जबरदस्त बंदा है। वकास भाई कुछ कह लेकिन रहे थे आप? सो जी जी, ये सोहबत की बात हो रही थी ना, तो ये भी एक जर्नी है। देखे ना, सोहबत में आपके तलहा भाई, आपके डॉक्टर साद थे, डॉक्टर फाद थे आपकी सोहबत में, अब शमस भाई भी आ गए हैं। तो ये अल्लाह पाक की देखे ना, बिगड़ा भी, बैलेंस भी रखना होता है ना। नहीं तो अपने बारे और मुस्तफा और मामू के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब बात किसी और तरफ जा रही है, मेरा ख्याल रिकॉर्डिंग बंद वैसे रिकॉर्डिंग तो बंद ये करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दे जाए। ये बाद में जो चले है इसको कट कर देना प्लीज। यार नहीं, मैं बाकी वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है यार। रुक जाओ हाँ एक जी, मिनट। जी वकास भाई आप खुल के समझ बोले। अभी नहीं